Okay, so yesterday we did first derivative test for a function of two variables. This is the topic is maximum or minimum for a function. Let me say that is f(x, y), and the result so far that we have from first derivative test that if a comma b is a point of maximum or minimum, so then del f over del x at point a comma b is equal to 0 and del f over del y at point a comma b is also equal to 0, right? So now let me come back to the definition of maximum or minimum. Let me say that if a comma b is a point of maximum or minimum, then there is a value of f a comma p. So in the neighborhood of this point, I shall have the value like this: f at a plus h and b plus k. Is it okay? Yes, sir. Now, for some existing neighborhood, the difference between f a plus h and b plus k minus f at a comma b and f at a plus h b comma b plus k minus f a comma b. If this difference is always positive for the existing values of h and k, then f a comma b will be a point of minimum. If this difference is Negative. if the difference is negative, then It gain a maximum. this is case of Maximum. maximum. So here, if this is always greater than equal to 0 for some existing values of h and k, then it is case of minimum. Otherwise, if this is a case of less than equal to 0, then this is a case of point of maximum. Sometimes it may also happen that this difference is not always positive, it is not always negative, right? You cannot find a value, the values of h and k such that this is always positive or this is always negative. So in that case, it is sometimes positive, sometimes it is negative. Then you will say that for that case, there is neither maximum nor minimum, and such points are called saddle points. Okay, so if f a plus h comma b plus k minus f a comma b changes its sign when this changes its sign. Come, you cannot find if this is a situation that you cannot find the values of h and k such that this statement is false. Always, whatever value you take of h and k, you select any h and k, this will be changing its sign. Okay, then this is case of neither maximum neither maximum nor minimum. nor minimum.
That is, such points are called saddle points. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now let us go for further investigation. Let me recall once again the Taylor series expansion for a function of two variables. That is fx plus h y plus k. This is equal to fx comma y plus h del f over del x plus k del f over del y plus 1 upon factorial 2 h square del square f over del x square plus twice hk del square f over del x del y and plus k square del square f over del y square and plus higher order terms. Is it okay? Yes. Yes, sir. Now, if there is some point a comma b or any value of x comma y, and at that point there is either point of maximum or that is a point of minimum, then this term will become equal to 0. So del f over del x is equal to 0 and del f over del y is equal to 0. And bringing it to the left hand side, I shall have f at y x plus k h, f at x plus h comma y plus k minus fxy. This is equal to 1 upon factorial 2 h square. Let me write down this as del square over del x square, different notation, f x x plus twice hk f x y and plus k square f y and plus higher order terms. Right now I found that I just saw that if the sign of this fx plus h comma y plus k minus fxy is always greater than or equal to 0, right? What is that case? Greater than or equal Greater to than What is that case? If it is positive, if this is minimum. fx plus h comma y plus k minus fxy, if it is positive, The case of then for that point the case will be a point of minimum. If this is negative, maximum. If it is not decided or determined, then Neither. some ever changing, so neither maximum nor a minimum. So now if I am having small values of h and k, because we are going to investigate the behavior in a neighborhood of the point concerned. So if I am having the small values of h and k, I shall go for a small neighborhood. So the values of h and k will be small. That sign will be governed by this term only, because suppose for an example, if you take the value of h is equal to 0.1, the value of h square will be 0.01 and h power 3 0.001. So the further terms may be neglected, right? So the main effect on the sign will come from this term. So if I decide the sign of this term, the sign of the left hand side, that is fx plus h comma y plus k minus fxy, can be decided, right? So now let me investigate for the sign of this expression. Is it clear? भाई अगर ये जो टर्म मेरा है,
ये टर्म इसके साइन को गवर्न कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा, h की पावर बढ़ेगी, k की पावर बढ़ेगी, तो स्मॉल h और k मैंने ले रखे हैं, तो जो सबसे बड़ा टर्म होगा जो गवर्न करेगा वो ये वाला टर्म होगा, आगे वाले रिलेटिवली बहुत छोटे होंगे, तो उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग साइन डिसाइड कर दें तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी वो कंडीशन होगी जब जो मेरा पॉइंट कंसर्न है वो पॉइंट मैक्सिमम का बनेगा, वो पॉइंट मिनिमम का बनेगा, या फिर वो पॉइंट सैडल पॉइंट होगा, या फिर ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है कि हमारी जो कंडीशन हम लोग डेराइव करने वाली हैं वो काम ही ना करें, मे बी ए सिचुएशन लाइक दैट। उन सब को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो टर्म है मेरा, इसके साइन को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करना देखते हैं। राइट, तो यहां से मैं क्या करता हूं, 1/f(x) कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरा टर्म बन जाएगा 1/2, it is constant, so I am just omitting it because I have to decide only the sign, not the value. So 1/f(x) ब्रैकेट में आपका आएगा h² f(x) स्क्वायर प्लस ट्वाइस hk fxy, okay, into fxx, right, plus k square fyy fxx. Is it okay? Right? Now I add one term and then subtract. What is that? Add here plus k square, okay, k square fx y square minus k square fx y square. Right? So now this one and this one, this can be written as is equal to 1/fxx. This is now h fxx plus k fxy whole square, right, and plus k square fxx fyy minus fxy square. Now see here, because it is the complete square of this term, this will be always positive. Is it okay? Plus k square. K square will also be once again always positive. Now the signature of this term will play its role. fxx into ffy minus fxy square. Right? Yes. Now if this term is positive, the complete bracket will be positive, so that sign will be governed by now fxx. If it is positive, this will be positive. If this is negative, this will be negative. Right? So there is a condition now. Number 1, if fxx fyy minus fxy whole square, this is positive, that is greater than 0. Okay. Also fxx is also positive, because if fxx is no 0, these calculations can never be carried. So the equality is not there. So
fxx is always greater than 0. Now what is this case? Now this term will always be positive. Okay, and if this is positive, this is the case of minimum, right? Now I have the condition, then point of minimum, right? Confirm? Second, if fxx fyy minus fxy whole square is less than 0, sorry, greater than 0, this is greater than 0, okay, and fxx is less than 0, then this whole term will be negative. This will be a case of maximum. So the point of maximum. Now, okay, the case that this term is always positive has been decided. Okay, now if this case, now come to the case this value is a negative. Third one, I am erasing it. Come to third one. Third case, fxx fyy minus fxy whole square is less than 0. Okay, then this term will be positive, this will be negative. Is it okay? Now fx for some fixed point fxx, fxy, fyy, they are all fixed values. They are all fixed values, either positive, negative. That is not the case. Now the sign will depend upon the values of h and k. Is it okay? So this term is always positive, and this is always positive. now always positive, and this is negative. So positive minus नेगेटिव, अगर पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा है तो नेगेटिव होगी, राइट? यस सर। तो अब चूंकि h और k की मेरे पास सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, पॉसिबल नेबरहुड में h और k की हर पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास हो सकती है, ठीक है ना? तो अब सपोज h इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? k स्क्वायर fx y स्क्वायर, राइट, माइनस प्लस दिस विल बी k स्क्वायर fxy होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी माइनस fxy, ठीक है ना? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? k स्क्वायर एंड fxx एंड fy, ठीक है? fxx और fyy की वैल्यूज जो भी होंगी साइन फिक्स हो जाएगा। अब सपोज वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ, k को 0 कर लेता हूँ, h को छोड़ देता हूँ। h मेरा अब यहाँ पर k 0 लिया तो ये सब 0 हो गया, h स्क्वायर fxx स्क्वायर fxx कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन आपका फिक्स नहीं बनेगा, कोई भी ऐसी hk की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसके लिए आप सर्टेनली कह सकें कि ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका साइन हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। Is it okay? So then you will write down this is a case of neither maximum
nor minimum. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. चलिए. Now there is another case that is to be investigated. fxx fyy minus fxy whole square is equal to 0. Right? This is now equal to 0. So this is as fxx plus k fxy, its whole square is equal to 0. Right? Okay. Now if I choose values of h and k such that this expression is equal to 0, this will become equal to 0. Like fx plus h comma y plus k minus fxy, that will become equal to 0. And that is the case I cannot have certain statement about the nature of that point. So for this case I find that test is failure. So further investigations may be done. Because in that case this term will become 0. The sign will be governed by now third order derivative terms. That is not for us. We are just confined to all these 4 results, right? क्योंकि अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को नहीं जाना है, तो केवल हमारा ये इतना डिसाइड हो गया कि अगर fxx fyy माइनस fxy का होल स्क्वायर, ये पॉइंट मेरे पास, ये क्वांटिटी मेरे पास पॉजिटिव आती है, तो जो fxx का साइन है और वो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? क्या कंडीशन लगाई? मिनिमम का. वो अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम का. और अगर ये वाला टर्म लेस देन 0 आ गया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम. और अगर 0 आ गया तो फिर हमारा टेस्ट फेल्योर है. जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमको करना पड़ेगा, जो हमको नहीं करना एटलीस्ट इस अपने सिलेबस के लिए. इज इट ओके? तो अब इन कंडीशंस की हेल्प से मैं डिसाइड कर सकता हूं कोई मेरा पॉइंट जो है मैक्सिमम का होगा या मिनिमम का होगा या फिर सेटल पॉइंट बनेगा. ठीक है ना? और अगर इसके लिए वर्किंग रूल की मैं बात करूं तो वर्किंग रूल क्या होगा? given function fx comma y, find del f over del x and find del f over del y. Put this equal to 0 and del f over del y equal to 0. Solve these equations. You will get some points. Those are called critical points. Yes, sir. And for every point find then fxx, fyy and fxy, and see according to the derived condition which condition is satisfied, accordingly the result will be there. Fine. So this is the topic of the maximum or minimum for a function of 2 variables. Is it fine? Yes, Clear to all of you? Any doubt? No, nothing? Okay. So now we move to the next topic. That is called Lagrange multiplier method. Okay, right? Yes, sir. Fine. In our real life, we find some problems for which the method to find out a maximum or minimum
is subject to some given condition. Okay, let me explain this thing with the help of an example. Suppose I am having a plane. Okay, so then the plane of equation is given by ax plus by plus cz is equal to d. This is nothing but this is the equation of a some plane in 3-dimension space. Okay, अगर मैं a b c d की वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ, सपोज इस तरीके से 2x minus y plus z is equal to 5. तो ये क्या है, मेरा एक प्लेन. ठीक है, अब प्लेन है 3D स्पेस में है, हमेशा रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स है. तो जो मेरा रेफरेंस कोऑर्डिनेट फ्रेम का ओरिजिन है, मुझे इस प्लेन पर कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से मिनिमम. राइट, द प्रॉब्लम इज फाइंड ए पॉइंट x, y, z on the plane for which the distance is minimum from the origin. Okay. Yes, sir. Now, if there is some point x, y, z, then its distance from the origin is given by square root of x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus Z z minus 0 square. So this is nothing but the square root of x square plus y square plus z square. अब डिस्टेंस मिनिमम निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन के लिए मुझको मिनिमम फाइंड आउट करना है. लेकिन वो जो मिनिमम है, वो जो पॉइंट है, वो कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है इस प्लेन पर. ठीक है ना, तो इसका मिनिमम निकालना है, लेकिन एक कंडीशन भी मेरे साथ में हो गई जो कि गिवन है मुझे इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. क्लियर? तो जो अगर मैं अपनी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट करूं, तो मेरी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अब हो जाएगा फाइंड मिनिमम पॉइंट ऑफ square root of x square plus y square plus z square subject to 2x minus y plus z is equal to 5. Does it okay? Yes. Now this is a problem. This may be restated because if I need the minimum value of square root of x square plus y square plus z square, right? The minimum value of square root of x square plus y square z square, and correspondingly I may say minimum value of x square plus y square plus z square. क्योंकि जो क्वांटिटी स्क्वायर रूट में आ रही है, अगर वो मिनिमम होगी तभी तो स्क्वायर रूट मिनिमम बनेगा ना. तो उसको थोड़ा सा मैं रिडिफाइन कर लेता हूं, that find minimum of x square plus y square plus z square subject to 2x minus y plus z is equal to 5. Right? Okay? This is called constraint maximization or minimization. Right? This is called constraint maximization or minimization.
राइट? इज इट फाइन? अब इसको मैं जनरल स्टेटमेंट में लिख सकता हूं, कैसे? that find maximum or minimum of function f(x, y, z) subject to the condition g(x, y, z) is equal to 0. ठीक है? तो जो मेरे पास Lagrange's multiplier method है, that method will give us a way to solve this problem if the solution exists. अगर सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते. तो हम लोग को ये भी देखना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए गिवन मेथड है Lagrange's मल्टीप्लायर मेथड. इज इट क्लियर? ठीक है ना? इसको हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. डन? ओके.